स्क्रीन दिसत आहे का सगळ्यांना? हो सर. बढ़िया. सो 50 जण जॉइन झाले. ठीक आहे. So good afternoon dear students. Day before yesterday I conducted lecture on the same topic, that is fused heterocyclic compound indole, quinoline and isoquinoline, but the lecture was recorded, lecture was conducted on mobile. So on mobile there is no facility of recording. So because of this I am repeating this lecture and simultaneously recording is going on. So what is meant by indole? Indole is nothing but the fused ring heterocyclic compound in which a 6-membered carbocyclic benzene ring is attached with 5-membered pyrrole ring. So 6-membered benzene ring is fused with pyrrole ring. The fusion point is at position number 2, 3. If put nitrogen as a position number 1, this carbon will be 2, 3, 4, 5. Okay. So 2, 3 position पे benzene ring का और 5-membered pyrrole ring का fusion हुआ है. अच्छे से देख लो स्ट्रक्चर को. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बेंजीन के ऊपर 3 डबल बॉन्ड है और इधर वाले 5-membered रिंग में एक डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है. लोन पेयर एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट है. तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस इंडोल्स आर 1, 2, 3, 4, 5. 5 into 2, 10. Okay. So there are 10 pi electrons. So it follows the 4n plus 2 pi electron Huckel rule of aromaticity. So this indole is aromatic compound. So indole is a aromatic heterocyclic compound with the formula of C8H7N. It has bicyclic structure, consists of 6-membered benzene ring fused with 5-membered nitrogen containing pyrrole ring, as I have already explained. So what is important in this indole is the synthesis of indole, and we have only one synthesis in our syllabus, that is preparation or synthesis of indole by Fischer method, which is also called as Fischer-Indole synthesis. बहुत फेमस है. फिशर नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस सिंथेसिस को इन्वेंट किया है, इसलिए उसने उसका खुद का नाम दिया है Fischer-Indole synthesis. So what is the Fischer-Indole synthesis? See the text here. In this method, the phenylhydrazine is boiled with carbonyl compound such as pyruvic acid. What is this Fischer-Indole synthesis? It is the method in which phenylhydrazine is boiled with carbonyl compound. Which carbonyl compound? Such as pyruvic acid. Okay. So the reaction of hydrazine, phenylhydrazine with pyruvic acid results in formation of a phenylhydrazone. Results in formation of phenylhydrazone. And when this phenylhydrazone is boiled with acid catalyst, when this phenylhydrazone is boiled with acid catalyst, it undergo a certain type of rearrangement, forming indole 2-carboxylic acid as a cyclized product, and this cyclized product on decarboxylation finally gives indole. So it is explained in this scheme. See here, this is your phenylhydrazine. Okay, so benzene ring attached to NH2. So PH, NH, NH2 is phenylhydrazine. When this phenylhydrazine is created with pyruvic acid, CH3, C double bond O, COOH. CH3, C double bond O, COOH. Okay, so this is pyruvic acid. When this pyruvic acid and phenylhydrazine, they are heated, they readily loses water molecule. They readily loses water molecule.
So to form a double bond between this nitrogen and this carbonyl carbon, okay? So इसका imine जैसा structure बनता है जिसको हम बोलते हैं hydrazone. So this has to be boiled in presence of acid catalyst. Dehydration takes place to form this phenyl hydrazone. See here, this nitrogen and this carbon, nitrogen, they are bonded together with double bond. Okay, so this compound is called as phenyl hydrazone. When this phenyl hydrazone is boiled with ammonium chloride, somebody's mic is open. Please mute yourself. When this phenyl hydrazone is boiled with acid catalyst, it undergo rearrangement. Okay, so what type of rearrangement takes place? It is called as intramolecular rearrangement. Within the molecule, a rearrangement is taking place. Called as a can I talk? Please mute yourself. Okay. So please do not make noise. Okay. जैसे गाने वाने बज रहे हैं इससे डिस्टर्ब होता है. So it is the intramolecular rearrangement which results in a formation of indole 2 carboxylic acid. Okay, indole की रिंग है और ये सेकंड पोजीशन है जिसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है. नेम ऑफ कंपाउंड इज indole 2 carboxylic acid. This indole 2 carboxylic acid, when it is heated, it loses carbon dioxide and the reaction is called as decarboxylation. Okay, so indole 2 carboxylic acid, when it is heated, undergo decarboxylation to give the final compound which we call it as a indole. Okay, so this indole is prepared in this way. This is a reaction steps wise. These are the reaction stepwise. Okay, so this is first step, formation of phenyl hydrazone. This is second step, formation of indole 2 carboxylic acid, and this is the third step, that is decarboxylation. Now what is the mechanism of this? So mechanism of this Fischer indole synthesis is supposed to take place through a acid catalyzed benzene type of rearrangement. Okay, rearrangement means this compound NH type of compound is the benzene type of compound. Okay, so intramolecular rearrangement in which there is a 3,3 sigmatropic shift type of rearrangement. ये देखो यहाँ पे, ये अगर नाइट्रोजन को वन पोजीशन दे तो ये सेकंड थर्ड हो जाती, और इधर वाले ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर जो मेरा कर्सर घूम रहा है ना, if you put that nitrogen as position number 1, this carbon will 2 and this carbon will 3. Okay, so 1 2 3 1 2 3, so there is an additional bond formation taking place between this. Okay, 3 3, so this is called as 3 3 type of sigmatropic shift. So it is a benzene like a rearrangement in which starting phenyl hydrazone is obtained. This phenyl hydrazone is converted to its enolic form, tautomeric form. Okay, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, तो ये वाले कंपाउंड में यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना. If this CH is shifted here, this double bond electron will be shifted on nitrogen. So tautomeric compound of phenyl hydrazone will be obtained. When this tautomeric compound of phenyl hydrazine, it's created with the acid catalyst. When this tautomeric, अरे कोण काय लिहित आहे ब्लॅक बोर्ड वर, काय लिहित आहे मोबाईल वर, ते लाल अक्षराने पुसते. तुम्ही आपल्या मोबाईल वर काही किचडू नका, इकडे व्हिज्युअल होते, व्हिज्युअलाइज होते. ओके, डोंट एनोनेट yourself on the slide. ते इरेज कर बर, कोणाचं आहे ते. I will take a strong action if you are disturbing the class like this.
So this tautomeric form of phenylhydrazone when is created with acid catalyst. What this acid catalyst does, the acid act as a electrophile and this nitrogen containing lone pair act as a nucleophile. Okay, so this lone pair goes with proton and this lone pair goes with second proton, and the result of this is that both the nitrogen accept this proton and they are becoming positively charged. They are becoming positively charged. Okay, once they become once they became positively charged, then their electronegativity will increase and they will activate the cyclization. Then in the next step, this type of intramolecular cycle rearrangement is taking place. See here, this carbon carbon double bond attacks on benzene ring, formation of CC bond takes place. This benzene ring pi electron will be shifted towards this CN bond and this nitrogen-nitrogen single bond will be broken and that electron of that sigma bond will be shifted towards this carbon nitrogen right hand side. Okay. So result is that as a result of which this nitrogen carbon double bond will be formed, positive charge will remain as such, and this additional carbon carbon single bond will form and aromaticity will be lost and this one exocyclic double bond is formed. One exocyclic double bond is formed. कोण बोलत आहे रे? सगळ्यांनी आपला माईक म्यूट करा प्लीज. कोणाचा माईक आहे सुरू? Please unmute yourself. So this, after this cyclization, this rearrangement step, one additional carbon-carbon bond will be formed, and this aromaticity of benzene ring will be lost, and there is a formation of a new exocyclic double bond between carbon and nitrogen. Okay, so both the positive charges of nitrogen will remain as such. In the next step, this compound, cursor moving compound, regains the aromaticity. It regains the aromaticity. So this CH bond, जो मैंने ऊपर लिखा है CH bond, CH sigma electron, they are shifted towards benzene ring. Double bond will form, and this hydrogen will go out in the form of proton. That proton will be taken by this nitrogen. Okay, so or it will be lost, and this pi electron will be shifted on nitrogen. ये जो pi electron है CN double bond के, ये जो कर्सर जहाँ पे मूव हो रहा है ना, वहां के जो CN डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन इधर नाइट्रोजन के तरफ शिफ्ट होंगे. देखो इस तरीके से, देखो मैंने रेड मार्क से बताया है. दिस सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन will be shifted toward benzene ring and this pi electron of this CN double bond will be shifted towards nitrogen. Okay, तो नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेंजीन रिंग रिगेन हो जाएगी और H plus will go out in the H plus will be lost. Okay, so minus H plus and this compound will be formed. Okay, this new compound will be formed. Now this new compound will have nitrogen with lone pair. What this lone pair of nitrogen do? It act as a nucleophile and this carbon is electrophilic in nature because of positive charge on this nitrogen. This carbon is electrophilic in nature because यहाँ पे भी withdrawing group है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव NH2 प्लस ग्रुप भी है. ये कार्बन ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है और उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर ये nucleophilic lone pair on nitrogen readily attacks. So it attacks like this, and this double bond after attack there is a formation of a
sigma bond between nitrogen and carbonyl carbon, and this electron of this carbonyl carbon and positively charged nitrogen double bond will be shifted on nitrogen. नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है इस तरीके से देखो. Okay, so cyclization step will occur. In this cyclization step नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया. ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए. नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज चले जाएगा, उसके ऊपर लोन पेयर आ जाएगी. और फिर उसके बाद ये पहले वाला नाइट्रोजन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में इस्तेमाल होने के कारण उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप दिस NH sigma bond electron will be shifted toward nitrogen. Nitrogen positive charge will be neutralized, and this proton will go out in the form of H plus, and it will be taken by this NH2. Okay, so as a result of this, NH2 will be converted into NH3 plus, है ना. अब ये NH3 plus में convert हो गया. NH3 plus में convert होने के बाद फिर अभी एक step दूरी पे है हम पायरॉल के. वो कौन सी step है कि रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी. तो वन ऑफ दिस CH इलेक्ट्रॉन यहाँ के सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स पायरॉल रिंग. डबल बॉन्ड विल फॉर्म, H प्लस विल गो आउट एंड हियर NH3 विल गो आउट. इस तरीके से देखो, दिस CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, दिस cyclized pyrrole. Double bond will form. Okay, and this nitrogen carbon sigma bond will be broken, and that electron of that broken sigma bond will be taken by this NH3 ammonia. Okay, what are the going out outgoing species? One proton will go from here and one NH3 will go from here. Okay, so loss of one proton, loss of ammonia will result in formation of your compound, that is indole 2 carboxylic acid. This compound is called as indole 2 carboxylic acid. Now this indole 2 carboxylic acid, when it is heated, it undergo decarboxylation. How? See here, I have written this carboxylic acid in very simple manner. This OH of the carboxylic acid, यहाँ के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल सिग्मा बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. और ये पीरोल रिंग का कार्बन और वो कार्बोनिल का कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है. ब्रेक होने के बाद वहाँ के जो दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर वाले कार्बन के ऊपर आएंगे और वहाँ पे ये H प्लस जाके अटैच हो जाता है. ओके, सो न्यू product will be obtained. That product we call it as a indole. Okay, so this is your indole along with loss of CO2. यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या जा रहा है? CO2 जा रहा है. So this is the mechanism. I hope you will understand because I am repeating it. और जिसको भी समझ में नहीं आएगा वो एक बार फिर से वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा. Next compound in our syllabus is quinoline. Now what is meant by quinoline? Quinoline is again a heterocyclic compound. This type. See here, structure have been displayed on the board. Quinoline is a bicyclic compound in which 6-membered carbocyclic ring is fused with 6-membered pyridine ring. ये जो लेफ्ट हैंड साइड की जो रिंग है वो बेंजीन रिंग है और राइट हैंड साइड की जो रिंग है वो pyridine ring है. When benzene ring is fused with pyridine at 2,3 position, if this nitrogen is number 1, the adjacent carbon will become 2 and this second carbon will become 3. Okay, so at 2,3 position there is a fusion. The compound so obtained is called as quinoline. Quinoline is a bicyclic heterocycle with the chemical formula of C9H7N having ring fused with pyridine ring at 2,3 position. It is also called
one other naphthalene or benzopyridine. So it is also called as one other naphthalene or benzopyridine. Now the thing which needs to be studied in this phenolene is its synthesis. उसकी synthesis हमें study करनी है और वो भी किस मेथड से, scrub method से. Okay, so scrub method of synthesis of phenolene, it is very famous. What does this method comprise of? So it is one of the most important method for the preparation of phenolene, and in this method aniline is used, glycerol is used, and concentrated sulfuric acid is used. Okay, and the oxidizing agent nitrobenzene is used. When aniline is heated with glycerol in presence of concentrated sulfuric acid and an oxidizing agent like nitrobenzene, phenolene is obtained. How? See here. See the scheme, very carefully scheme. I am allowing you to watch the scheme. Watch the scheme carefully. This molecule is aniline, cursor moving, okay? Aniline. Benzene ring attached to NH2 group is called as aniline. And this glycerol, CH2OH, CHOH, and CH2OH. Propane 1,2,3 triol, which is also called as a glycerol. When glycerol is created with aniline in presence of concentrated sulfuric acid, followed by treatment with oxidizing agents such as nitrobenzene, gives phenolene, right hand side compound, phenolene. Okay. अब ये कैसे मिलता है? What is the mechanism of this reaction? So stepwise mechanism of scrub synthesis has been displayed below. How? See here. देखो, पहले स्कीम देखो, बाद में डिस्क्रिप्शन देखना. क्या हो रहा है? स्टेप 1 है और स्टेप 2 है. ओके, स्टेप 1 में क्या हो रहा है? स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन हो रहा है. किससे? ग्लिसरॉल से. सो ग्लिसरॉल फर्स्ट रिएक्ट विद concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 is a dehydrating agent. It dehydrates this glycerol and forms acrolein. How? यहाँ से एक H2O जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहाँ से एक H2O जाएगा, इधर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. अब ये जो डबल बॉन्ड है वो इनोलिक रूप में है, तो वो कीटो रूप में आ जाता है. तो आइसोमराइजेशन होता है. थोड़ा करके देखना, आपको एक्रोलिन मिलेगा. वंस दिस एक्रोलिन इज फॉर्म इन द सेकंड स्टेप, दिस एक्रोलिन रिएक्ट्स विद aniline. बेंजीन रिंग NH2. NH2 के ऊपर 2 लोन इलेक्ट्रॉन है, तो वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट होता है. और ये जो कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे, उसके पहले वाला मतलब ये एक्रोलिन. ओके, सॉरी, दिस एक्रोलिन इज देयर. नाउ दिस एक्रोलिन में क्या होता है, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी समझ लो, आपको समझ में नहीं आएगा. ये जो डबल बॉन्ड है ये पोलराइज डबल बॉन्ड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड जैसा विथड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रहने वाला ग्रुप. तो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रहने की वजह से क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर झुके हुए रहते हैं. ओके, so electrons are shifted more towards this carbon. So this carbon is called as alpha carbon. This is your aldehyde group. First carbon attached to aldehyde group is called as alpha, and second carbon, terminal carbon, is called as beta. So this is alpha beta unsaturated. Why unsaturated? Because there is the presence of double bond, carbon carbon double bond. Okay, so this is alpha beta unsaturated aldehyde, that is acrolein. Here this alpha carbon is delta negative, whereas this beta carbon is delta positive. Why? Due to negative inductive effect of this carbonyl group. Okay, so as a result of this, beta carbon is electrophilic in nature. So on this electrophilic beta carbon, this nucleophilic nitrogen easily attacks. Okay, तो ये अटैक हो गया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया. अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ का ये प्रोटॉन जो है NH2 का, वो प्रोटॉन अल्फा कार्बन के ऊपर जाके अटैच होता है.
और वो जो निगेटिव चार्ज रहेगा जिसको हम कार्बेनियन बोलते हैं वो न्यूट्रलाइज होता है। ओके, डायरेक्ट बताया मैंने। अब once this compound is formed, the second step is the attack of benzene ring on carbonyl carbon. Okay, so benzene ring के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, और ये कार्बोनिल कार्बन का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल डबल बॉन्ड, that double bond gets break, pi electrons are shifted towards oxygen. Okay, तो ऑक्सीजन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। अब इस निगेटिव चार्ज को कौन लेगा? निगेटिव चार्ज को ये वाला प्रोटॉन लेगा, तो वो OH में कन्वर्ट होता है। ओके, और जैसे ही ये चले जाएगा यहाँ पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होते हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होने के बाद कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसकी एरोमेटिक लॉस हो जाएगी। ओके, और साइक्लाइज प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब जैसे ये स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर ट्राई करता है अपनी एरोमेटिसिटी रिगेन करने के लिए, तो इस CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन will be shifted here, H plus will go out, double bond will be shifted here. Okay, so H plus will go out, and this type of benzene ring compound with this carbon nitrogen single bond will be formed. So this is the compound which is formed. And in the next step, this OH is there. Okay, यहाँ पे OH है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड चाहिए, तो डिहाइड्रेशन होता है। ओके, loss of water molecule takes place to form double bond here. Now once this double bond is formed, what is the requirement? Requirement is the formation of quinoline. तो quinoline फॉर्म होने के लिए फिर से हमको क्या चाहिए? और एक डबल बॉन्ड चाहिए। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, तो उसकी पूर्तता किससे की जाती है? ऑक्सीडेंट से। ओके, व्हेन यू यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रोबेंजीन, दिस nitrobenzene act as a dehydrogenating agent. So loss of two hydrogen takes place to form a quinoline. Okay, the process is called as oxidation, and the reagent is called as oxidizing agent. So this quinoline is formed. Okay, so overall procedure is 3 steps. Number 1 is the formation of acrolein, number 2 is the cyclization, and number 3 is the ऑक्सीडेशन। ओके, बट ऑक्सीडेशन और साइक्लाइजेशन को मैंने एक ही स्टेप में मर्ज किया है, जैसा कि मैंने उस दिन बताया। तो ये पढ़ो ऊपर का सेंटेंस। इनिशियली इन स्टेप 1 the glycerol reacts with concentrated H2SO4 and undergo dehydration to form acrolein. Okay, is it clear? And in second step, the condensation of acrolein with aniline followed by oxidation in the presence of nitrobenzene gives you quinoline as shown below. Is that clear? Yes. तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, इसको देख लेना जो कोई भी मिस कर रहा होगा। After that, isoquinoline. Now what is meant by isoquinoline? See here, this is the isoquinoline. Only there is a change in the position of nitrogen in quinoline and isoquinoline. Quinoline में नाइट्रोजन बेंजीन रिंग को अटैच था, और अब आइसोक्विनोलिन में वन पोजीशन ज्यादा अपार्ट है ना। तो what is isoquinoline? It is a fused ring heterocyclic compound in which benzene is fused with pyridine ring. The fusion position is different. 3-4 position. Fusion की जो position है वो 3-4. If nitrogen is 1, this carbon will be 2, this will be 3, this will be 4. So the fusion position will be 3-4 position. So 3-4 fused 2 as a naphthalate. This is the name of this compound. Isoquinoline is a bicyclic heterocycler with a formula similar to pyridine, that is similar to quinoline C9H7N, and having benzene ring fused with pyridine ring at 3-4 position. How? See here, 1, 2, 3, 4, 3-4 position fusion. It is also called as 2-azanaphthalene. यहाँ पे गलती से 1-aza है. It is also called as 2-azanaphthalene or benzo-C-pyridine. Benzo-C-pyridine, not B. So it is a structural isomer of quinoline.
No, the important is the preparation of isoquinoline with Bisler-Napier-Laski synthesis. With the Bisler-Napier-Laski synthesis. What is the Bisler-Napier-Laski synthesis? It is a three-step process. Number one is the formation of acyl derivative from beta-phenyl ethylamine. What is beta-phenyl ethylamine? So this is the starting material used in Bisler-Napier-Laski synthesis. Beta-phenyl ethylamine. Okay, phenyl ring अल्फा बीटा मतलब ये CH2 NH2 है. ओके, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया. बीटा को फिनिल रिंग अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज बीटा फिनिल इथाइल अमीन. When it is created with acyl chloride where R is equal to H, formyl chloride. Okay, so there is a loss of HCl, there is a loss of HCl, and there is a formation of amide bond there. There is a formation of amide bond. ऐसा एक अमाइड बॉन्ड फॉर्म होता है नाइट्रोजन और कार्बोनिल के बीच में, अमाइड बॉन्ड. ओके, अब मैंने इसको ऐसे लिखा है क्योंकि साइक्लाइजेशन को शो करने में मुझे आसानी जाएगी. तो दिस अमाइड बॉन्ड फिर विल फॉर्म now where R is equal to H. Once this amide bond is formed, the second step is cyclization of this acyl derivative of beta phenyl ethylamine. So see, this is the acyl derivative of beta phenyl ethylamine. ये नाइट्रोजन है, तो ये कीटो ग्रुप में है, इसको इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो. कैसे? नाइट्रोजन की लोन पेयर को इधर शिफ्ट करो और कार्बोनिल कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करो, आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा. ओके, this enol form will be formed. Now once this enol form is formed, the loss of water molecule takes place like this. Okay, and the loss of water molecule is called as dehydration, and for that purpose you have to use dehydrating agent. So P2O5 is used as a dehydrating agent. So loss of water takes place to form 3-hydroisoquinoline. ऐसा 3,4-डाहाइड्रोआइसोक्विनोलिन कंपाउंड फॉर्म होता है. ऐसे 3,4-डाहाइड्रो, ये तीसरा और चौथे पोजीशन पे हाइड्रोजन है, इसलिए 3,4-डाहाइड्रोआइसोक्विनोलिन इज फॉर्म. When this 3,4-dihydroisoquinoline is formed, then the second step is the oxidation of this 3,4-dihydroisoquinoline. Okay, so for that purpose palladium carbon or cell. So when this 3,4-dihydroisoquinoline is created with palladium carbon or selenium at 160 degrees centigrade, it gives isoquinoline. The scheme has been shown below. See here, isoquinoline. This is your 3,4-dihydroisoquinoline. When it is created with palladium carbon or selenium at 160 degrees centigrade, loss of 2 hydrogen takes place with the formation of a double bond at that position, and the corresponding compound is called as isoquinoline when R is equal to H. So may I repeat it once again? एक बार repeat करने दो मुझे फिर से ये. So Bisler-Napier-Laski synthesis of isoquinoline is comprised of 3 steps. The first step is the formation of acyl derivative of beta-phenyl ethylamine. When beta-phenyl ethylamine is created with acyl chloride such as formyl chloride, loss of HCl takes place with the formation of a amide linkage there. When this amide derivative or acyl derivative of this beta-phenyl ethylamine is formed, it is created with phosphorus pentoxide. Okay, so when the treatment with phosphorus pentoxide takes place, it gives 3,4-dihydroisoquinoline. So before reaction, it enolizes. So this is the keto form of acyl derivative of beta-phenyl ethylamine. This keto form is converted to enol form. The process is known as keto-enol tautomerism. So shifting of electron and double bond is only there. So this is enol form. Why enol form? I have told on that day. This compound, right hand side compound, I am moving cursor. Look at there.
कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज इन, है ना, ENE, इन। डबल बॉन्ड को हम इन बोलते हैं ना, और अल्कोहल को ऑल बोलते हैं, ऑयल, ऑल। तो कंपाउंड के अंदर अल्कोहल भी है और इन भी है, तो कंपाउंड क्या हो गया, इन ऑल हो गया। So that's why it is called as enol. So once the enolic form is achieved, loss of water molecule takes place to form a cyclic product. It takes place under the presence of this dehydrating agent, that is phosphorus pentoxide. So the new product 3,4-dihydroisoquinoline is formed. Once this 3,4-dihydroisoquinoline is formed, it is subjected to a dehydrogenation by palladium carbon or selenium at 160 degrees centigrade. Result of this reaction is loss of 2 hydrogen from 3,4-dihydroisoquinoline to result in the formation of quinoline. To result in the formation of quinoline. देखो ये रेड लाइन में दिखाया है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं और डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। Okay? So in this way we have finished the all content of heterocyclic chemistry